गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज और सिक्योरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 300 से ज़्यादा पैसेंजर्स अभी निकारागुआ बाउंड प्लेन में जो है वो फ्रांस में अभी रोक लिए गए थे, क्योंकि लग रहा है कि इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल इन्वॉल्व है। तो अब हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन, पहले तो समझ लो कि ट्रैफिकिंग का मीनिंग होता है कोई भी ट्रेड जो इलीगल हो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या हुआ? ह्यूमंस का ट्रेड किया जा रहा है जो इलीगल है ना। क्यों किया जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग? ताकि सेक्सुअल स्लेवरी, कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ऑर्गन्स या टिश्यूज़ की एक्सट्रैक्शन करना, फोर्स्ड मैरिज, फोर्स्ड लेबर, डोमेस्टिक सर्विट्यूड, ये सब चीज़ों के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है। थर्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम है ये अक्रॉस द वर्ल्ड। और अगर इंडिया में हम एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो 2022 में 6500 ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसमें से 60% विमेन और गर्ल्स थी। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव प्रोविजंस क्या हैं ट्रैफिकिंग के इंडिया में? आर्टिकल 23 क्लॉज 1 जो है वो इससे डील करता है। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट भी जो है बनाया गया है। सीआरपीसी में भी जो है वो प्रोविजंस हैं। सेक्शन 370 का आईपीसी में प्रोविजंस हैं। पॉक्सो एक्ट जो चिल्ड्रन के केसेस में डील कर रहा है, वो प्रिसाइज डेफिनेशंस देता है कि क्या जो है ये फॉर्म्स ऑफ अब्यूज़ होगा। और कुछ और स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस भी हैं, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट। इन सब में भी जो है प्रोविजंस बनाए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए स्पेसिफिकली एक्ट्स बनाए हैं। तो अब गवर्नमेंट ने क्या इसके लिए जो है मेजर्स लिए गए हैं? एंटी ट्रैफिकिंग सेल बनाया गया है जो कि फोकल पॉइंट है कम्युनिकेट करने का ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक स्कीम भी है जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को जो है वो स्ट्रेंथन किया जा रहा है। और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो है वो 270 डिस्ट्रिक्ट्स में उसी के कंटेक्स्ट में बनाए गए हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जा रही है वर्कशॉप्स करवा के, ताकि जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, पुलिस ऑफिसर्स को जो है ट्रेन किया जा सके। जुडिशियल लेवल पर भी जो है ट्रायल कोर्ट लेवल पर जुडिशियल ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ड्रोन स्ट्राइक्स ऑन इंडिया बाउंड मर्चेंट वेसल। इंटरनेशनल रिलेशंस और सिक्योरिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2 मैरीटाइम एजेंसीज जो है उनको डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि अभी एक ड्रोन स्ट्राइक जो है उसने मर्चेंट शिप इंडिया के वाटर्स के पास जो है वो एक तरह से इंटरसेप्ट किया है। बट इसमें ऑफ कोर्स कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है कोई। तो इंडियन नेवी का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है ये सारी एक्टिविटी इंडियन नेवी और शिपिंग कंपनी के बीच में। वेसल का नाम है एम वी शेम प्लूटो, जो कि क्रूड ऑयल लेकर जा रहा था सऊदी अरेबिया से और इंडिया की तरफ मैंगलोर में आ रहा था। और उसके ऊपर ये कहा जा रहा है ड्रोन अटैक या मिसाइल अटैक जो है वो किया गया है। तो अब ये IFC-IOR क्या है? दिसंबर 2018 में इंडिया ने इसको बनाया, आई मैक गुड़गांव में। और इसको एक रीजनल कोलैबोरेशन ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बनाया गया। पार्टनर नेशंस के साथ एंगेज करता है, मल्टीनेशनल मैरीटाइम कंस्ट्रक्ट्स के साथ जो है ये मिलकर काम करता है, ताकि इंडियन ओशन रीजन को सिक्योर रखा जा सके। क्यों ज़रूरत है सिक्योर रखने की? क्योंकि 75% ऑफ वर्ल्ड का ट्रेड जो है और 50% ऑफ ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन जो है वो इंडियन ओशन रीजन के थ्रू ही पास होता है। ये इंडिया के सागर मिशन का भी या सागर फ्रेमवर्क का भी एक तरह से सेंटर जो है अ, उसी का पार्ट है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कोई भी अ, अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्लेम नहीं की गई है इस स्ट्राइक के बारे में, बट पेंटागन ने कहा है कि ये ईरान ने किया है अटैक। हुथी रिबेल्स ने भी इस रीजन में मोर देन 100 ड्रोन स्ट्राइक्स और मिसाइल अटैक्स ऑलरेडी किए हैं। और अलग अलग कंट्रीज़ के वेसल्स को टारगेट किया गया है। ठीक है। इंडिया ने उसी टाइम पर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है वो डिस्पैच कर दिया, एक वॉरशिप भी डिस्पैच करी ताकि कोई असिस्टेंस की ज़रूरत हो तो दी जा सके। ठीक है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चाइनीज़ कमर्शियल एंटिटीज़। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3 फ्रेश अरेस्ट्स किए हैं मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब करते हुए चाइनीज स्मार्टफोन मेकर वीवो और बाकी के अगेंस्ट। तो ये तीनों के तीनों प्रोब में जो है PMLA के प्रोविजंस लगाए गए हैं। तो ये देखा गया कि चाइनीज स्मार्टफोन मेकर जो हैं वो प्राइम अक्यूज हैं इन केसेस में। गवर्नमेंट आई मीन ED ने जो है सुप्रीम कोर्ट में बताया भी है कि वीवो ने लगभग $13 बिलियन जो है अपने प्रॉफिट जो है वो छुपाए कई महीनों तक। वीज़ा मैनिपुलेशन की, मतलब कई लोग जो वीवो से अफिलिएटेड थे वो अपने एम्प्लॉयमेंट जो है छुपाते थे वीज़ा अप्लाई करते वक्त। एम्प्लॉय ने जो है वो
कई प्रोविजंस जो हैं सिक्योरिटी के वो भी ब्रीच किए, ऐसे सेंसिटिव हिमालयन रीजन्स में चले गए जम्मू कश्मीर में जहाँ पर जाना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बैकग्राउंड देखें तो चाइनीज़ कमर्शियल एंटिटीज़ जो हैं वो इंडियन अथॉरिटीज़ के रडार में गलवान वैली के इंसिडेंट के बाद से ज़्यादा आ गई हैं। इंडियन अथॉरिटीज़ ने कई स्पाई रिंग्स जो हैं वो बस्ट किए हैं। मेजर चाइनीज़ टेलीकॉम कंपनीज जिनमें इन्वॉल्व थी, टैक्स रेट्स किए गए हैं उन पे, और मोबाइल ऐप्स के ऊपर क्रैकडाउन किया गया है। ऐसी वेब ऑफ कंपनीज़ को आइडेंटिफाई किया गया और इंडिविजुअल्स को पकड़ा गया जो कि एस्पेनाज में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो बीजिंग जो है वो एक तरह से डेटा और सीक्रेट्स दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें इन चाइनीज़ कमर्शियल एंटिटीज़ का जो कि इंडिया में कर रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं, वो इन इन माइंड्स को इन्फ्लुएंस करना चाहती हैं इंडियंस के, इकोनॉमिक कंट्रोल चाहती हैं इंडिया का, डेटा का एक्विजिशन चाहती हैं, एस्पेनाज करती हैं और साइंटिस्ट को टारगेट करती हैं ताकि इनोवेशन को और आईपीआर को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सके, ठीक है। स्मॉल साइज शेल कंपनीज का भी यूज़ किया जा रहा है ताकि जो है पैसे को इधर से उधर ट्रांसफ़र किया जा सके और जो है पैसे के ट्रेल को छुपाया जा सके। अब कैसे काम करती हैं ये अगर हम देखें तो स्मॉल कंपनीज़ जो कि चाइनीज़ नेशनल्स द्वारा कंट्रोल्ड हैं, वो उनमें डमी इंडियन डायरेक्टर्स बिठा दिए जाते हैं, जो कि असल में एग्जिस्ट नहीं करते, जस्ट टू शो कि ये लेजिटिमेट कंपनीज़ हैं। ये कंपनीज़ इवन फिजिकली भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं जहाँ पर रजिस्टर होती हैं, और इन्हीं कम वेब ऑफ कंपनीज़ के थ्रू लार्ज टेलीकॉम और हार्डवेयर मार्केट जो है इंडिया में उनको कंट्रोल किया जा रहा है। देखा गया है कि कई चाइनीज़ एम्प्लॉयज़ जो इन कंपनीज़ में काम कर रहे हैं वो एक्टिव मेंबर्स हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के। सीमलेस फ्लो ऑफ डेटा टू चाइनीज़ सर्वर किया जा रहा है आपके और मेरे जैसे यूज़र्स का, जिसमें आपके और मेरे मॉडेम्स, स्विचेस, राउटर्स, नेटवर्क्स का यूज़ करके ये डेटा जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो इस डेटा का इस्तेमाल करते हुए चाइनीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कंपनीज़ अपने जो है आपके बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए आपकी जो है स्कैनिंग करते हैं, आपके लिए एक तरह से डाटा आपका कलेक्ट करते हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ इंडियंस का। अब कैसे ये थ्रेट है इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी को, तो जो इन्वेस्टमेंट है अलीबाबा और टेंसेंट जैसी मेजर कंपनीज़ की, ये इंडियन कंपनीज़ को कंट्रोल करना चाहती हैं, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज चाहती हैं इंडिया के इकोनॉमिक और सिक्योरिटी सिस्टम पर। डीप कवर रेजिडेंट इंडियंस भेजे जाते हैं, वो ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो चाहे किसी कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, और मैसेज के सेंटिमेंट्स को जो है वो इन्फ्लुएंस करके इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। हमने देखा ही है नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है ना। फिर इवन नॉर्थ वेस्ट के भी कुछ रीजन्स में जो है जो है असर देखने को मिलता है, खासकर जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगते हैं, ठीक है। हमने रिसेंटली ये भी देखा कि तिब्बतन मॉन्क्स को भी जो है पैसे दिए गए ताकि दलाई लामा के ऊपर जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्टेन की जा सके। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है इस सब में? गवर्नमेंट ने जो इन चाइनीज़ कमर्शियल एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज शुरू से नज़र रख रही हैं, खासकर 2020 के बाद से। मल्टीपल रेड्स कंडक्ट की गई हैं ईडी द्वारा, पीएमएलए के अंडर उनको अरेस्ट किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भी कोई कंट्री अगर इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है तो उसको अप्रूवल जो है राउट के थ्रू ही जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ पाएगी, ऑटोमेटिक नहीं होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी चाइनीज़ ऐप्स को भी बैन किया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक चाइना कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बना दिया है ताकि फाइनेंशियल इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है उनके साथ कोलैबोरेट करके इन कंपनीज की इन्वेस्टिगेशन की जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट्स टू ग्लोबल साउथ। सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एयर चीफ मार्शल जो है वो एक इवेंट को एड्रेस कर रहे थे दिल्ली में, और उन्होंने बोला है कि इंडिजिनस एरोस्पेस प्लेटफॉर्म जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ये जो है कॉम्पिटिटिव और रिलायबल ऑप्शंस जो है वो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ के लिए, कि एयरफोर्स के लिए हम दे सकते हैं, ठीक है। तो कहा गया है इसी स्पीच में कि हमें कैपेसिटी डेवलपमेंट करनी होगी ग्लोबल सप्लाई चेन्स की, मैन्युफैक्चरिंग हब्स की एस्टेब्लिश करना होगा, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटीज़ इंडिया में, ठीक है। अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम 80s में शुरू हुआ था इंडिया के मिग 21 फाइटर्स को रिप्लेस करने के लिए। 2003 में इसको नाम दे दिया गया तेजस, और लेकिन फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस जो है वो एयरफोर्स में इंडक्ट करने के लिए फुली वेपनाइज फाइटर जेट की सिर्फ फरवरी 2019 में ही मिली। तेजस एयरक्राफ्ट जिसकी कैपेसिटी 4000 किलो है, सिंगल पायलट सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, मैक्सिमम स्पीड 1.8 मैक है, इसकी रेंज लगभग 850 किलोमीटर होती है और कॉम्बैट रेंज इसकी 500 किलोमीटर तक की है। अब लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रोग्राम जो है
वो 1999 के कारगिल वॉर के टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि इंडिया के पास एक होम ग्रोन लाइट वेट असॉल्ट हेलीकॉप्टर होना चाहिए जो कि ऐसे डिफ़िकल्ट बैटल फील्ड सिनारियोज़ में ऑपरेट कर सके। तो गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को 2006 में मंजूरी दी। तो उसी के ही अंदर जो है ये प्रचंड हेलीकॉप्टर जो है वो इंडिया का मल्टी रोल लाइट हेलीकॉप्टर बनाया गया, जिसने 2010 में मेडन फ्लाइट ली। और नवंबर 2022 में इंडियन आर्मी ने जो है ये हेलीकॉप्टर्स जो है वो अपनी चाइनीज़ बॉर्डर्स पर जो है वो लगाने शुरू कर दिए। तो ये ऐसा अकेला अटैक हेलीकॉप्टर है वर्ल्ड में जो कि लैंड भी हो सकता है, टेक ऑफ भी हो सकता है ऑल्टीट्यूड ऑफ 5000 मीटर्स पर, और बहुत ज़्यादा वेपन्स और फ्यूल के साथ। तो ये ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ बेसिकली वो कंट्रीज़ हैं जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा से जो है वो वंचित रह गई थी, और आइडियोलॉजी के कन्फ्लिक्ट की वजह से, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के कन्फ्लिक्ट की वजह से ये जो है कंट्रीज़ उसका पार्ट नहीं बनी। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। ये टॉपिक साइंस एंड टेक इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो माइंस सेक्रेटरी ने रिसेंटली लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस अंडर माइंस मिनिस्ट्री में कहा है कि आप पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और हाईवेज बनाओ। तो ये होता क्या है? टाइप ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज है। इसमें होता क्या है कि दो तरह से जो है रेजर्वॉयर्स बना दिए जाते हैं, एक बहुत ऊपर एक नीचे। तो ऊपर का जो पानी है जब वो नीचे गिरता है और जो है टरबाइन के ऊपर गिरेगा, जो है नीचे गिरेगा और फिर उसके बाद जो है वो टरबाइन पर गिरेगा। जब टरबाइन पर गिरेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है। तो ये एक तरह से सिर्फ पानी के फ्लो की स्पीड की वजह से जब है आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो, जैसे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में जनरेट करते हो। और इसका रिवर्स भी किया जाएगा, मतलब जब समझ लो कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तब तो ऊपर में पानी जो है स्टोरेज सिस्टम, जो बड़ा स्टोरेज सिस्टम है, उसमें उसमें से जो पानी है वो नीचे गिरेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। जब लो डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम है, तब जो है नीचे से यही पानी जो है उसको ऊपर भेजा जाएगा, उस बड़े वाले जो ऊपर वाले स्टोरेज में या रिजर्वायर में स्टोर किया जाएगा, ताकि जब हाई डिमांड आए तो फिर वही पानी को नीचे गिराकर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। ठीक है। तो इसमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम भी हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस भी हो रही है, लेकिन जो प्रोड्यूस है वो ज़्यादा होती है, तो एक तरह से जो सरप्लस एनर्जी है वो ही जो है यूज़ की जाती है। ठीक है। इसमें जो है परमानेंट आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा डैम्स पर, या फिर आप इसको इस हाइड्रो पावर स्टोरेज को कहीं पर भी बना सकते हो। ठीक है। तो इसीलिए जो है इसको बनाने को कहा जा रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्रोजेक्ट प्रयास। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जो है वो प्रोजेक्ट प्रयास उन्होंने लॉन्च किया है, ताकि इंडियन वर्कर्स और स्टूडेंट्स जो माइग्रेट कर रहे हैं वो सिक्योरली, ऑर्डरली और रेगुलर मैनर में माइग्रेट कर सकें। इसका मीनिंग है प्रमोटिंग रेगुलर असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स। इस प्रोग्राम को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स को भी इसमें कंसोलिडेट कर दिया गया है। ठीक है। तो गोल ये है कि सेफ, ऑर्डरली और रेगुलर माइग्रेशन हो सके एस्पायरिंग इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स और स्टूडेंट्स का। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है क्या? ये एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है। जब कोई स्टेट रिक्वेस्ट करती है तो ये सपोर्ट देती है माइग्रेंट्स को और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, रिफ्यूजीज और बाकी लोगों को। 172 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें। 8 स्टेट्स जो हैं इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस रखती हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्रह्मा 2D। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक और के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आईआईटी गुवाहाटी ने एक इंडिजिनस रिवर मॉडल बनाया है जिसका नाम ब्रह्मा 2D है। तो ये बेसिकली ब्रेडेड रिवर एड हाइड्रो मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर एक मैथमेटिकल मॉडल है जिससे कि हम गेज कर सकेंगे कि लार्ज ब्रेडेड रिवर्स जैसे ब्रह्मपुत्रा, उनका फ्लो कैसे होता है। एक क्वाजी 3D रिवर मॉडल देगा ये बनाकर, जिससे हमें ये समझ आएगा कि कितनी तेज़ी से जो है पानी मूव होता है अलग अलग डेप्थ के लेवल पर इनसाइड अ रिवर। ठीक है। उसकी सर्कुलेशन कैसी होती है अराउंड अ स्ट्रक्चर। ठीक है। ताकि हम रिवर बैंक इरोजन को रोक सकें। ये इंजीनियर्स को हेल्प करेगा सस्टेनेबल हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाने में। ठीक है। और ये मॉडल जो है हमें ये भी हेल्प करेगा कि हम एक्वाटिक स्पीशीज़ जो है उनकी हैबिटेट सुटेबिलिटी को भी अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनेस्को अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो 3 हेरिटेज प्रोजेक्ट्स जो है पंजाब और हरियाणा से चूज़ किए गए हैं यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2023 के लिए। ये जो यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड्स हैं कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए, ये प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट
और पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन चाहते हैं रीजन को, कल्चरल हेरिटेज को जो है कंजर्व करने के लिए। साल 2000 से जो है ये इंस्टीट्यूट किए गए हैं ये अवार्ड्स। और जो अभी रिकॉग्नाइज साइट्स हैं उनमें 5 चाइना से हैं, 6 इंडिया से हैं और 1 नेपाल से की गई है। इंडिया में अगर हम देखें तो रामबाग गेट अमृतसर का, उसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है। पीपल हवेली जो है रीजनल होम स्टे है पंजाब में, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ऑनर दिया गया है। कर्निकारा मंडपम जो कि केरला में सिचुएटेड है, उसको अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन मिला है। एपिफनी हरियाणा में, डेविड ससून लाइब्रेरी और रीडिंग रूम मुंबई में, बीकानेर हाउस न्यू दिल्ली में इनको अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है। तो अगर हम रामबाग गेट और रैम्पार्ट्स के बारे में देखें तो 3 स्टोरीड स्ट्रक्चर है जिसमें कि लोकली सोर्स्ड मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हुए जिनको बनाया गया है ट्रेडिशनल बिल्डिंग टेक्निक्स में। ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं कि पीपल हवेली क्या है। गुरदासपुर की जो होम स्टे है वो एक लॉजिकल और ट्रेडिशनल बिल्डिंग मेथड से इसको बनाया गया है और लोकली सोर्स मटेरियल से। विमेन एम्पावरमेंट की बात करता है ऑफ कोर्स बैरी कलेक्टिव जो इनिशिएटिव के थ्रू, जिसमें कि विमेन को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं और इन्वायरमेंटली कॉन्शियस क्राफ्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनेस्को ब्रिक्स वर्से। तो ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु जो है उसको एक्कलेड्स मिले हैं यूनेस्को के 2023 का प्रिक्स वर्साई अवार्ड मिला है। ये प्रिक्स वर्साई अवार्ड क्या है, 2015 से दिया जा रहा है यूनेस्को द्वारा। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करता है ये आर्किटेक्चर और डिज़ाइन में, और सस्टेनेबिलिटी इसका एक मेन फोकस रहता है। तो टर्मिनल 2 जो है बेंगलुरु एयरपोर्ट का, उसको वर्ल्ड के मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स में एक रिकग्निशन मिली है। तो जो T2 है ये एक टर्मिनल इन अ गार्डन भी इसको हम कहते हैं। ये 4 फाउंडेशनल पिलर्स पर बनाया गया है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस दिख रही है इसमें, टर्मिनल इन अ गार्डन एक जिसमें कि इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल स्टीवर्डशिप दिखती है। कर्नाटका के रिच कल्चरल हेरिटेज और कल्चर को जो है वो इसमें शोकेस किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वाटसन एक्स डॉट ए आई। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रीसेंट जो COP28 हुई थी तो उसमें नासा और IBM ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बनाया है जिसको वाटसन एक्स AI कहा जा रहा है। ये IBM और नासा ने जॉइंटली बनाया है। इससे यूज़र जो हैं वो अर्थ में स्पेस के थ्रू इन्वायरमेंटल चेंजेस को मेजर कर सकेंगे। इस मॉडल में जो है इस मॉडल को सिंप्लीफाई इतना सिंपल किया गया है कि आम यूज़र इसको यूज़ कर सके। और ये कैसे काम करेगा, इसमें जो है बहुत जो है अनकैटेगराइज डेटा की जो है ट्रेनिंग दी जा रही है इस मॉडल को, जो कि ऑफ कोर्स नासा ने प्रोवाइड किया है। IBM जो है इसकी फाउंडेशन बना रहा है इस मॉडल की, ताकि उस डेटा को इंटरप्रेट ईजिली किया जा सके। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is human trafficking. This topic is important for your security section and also your social issues. So more than 300 Indian passengers of a Nicaragua bound airplane have been held in France over suspected case of human trafficking. So we have to understand what is human trafficking, but for that we have to understand what is trafficking. So trafficking is any trade which is illegal. Human trafficking naturally means trade on humans, which is of course illegal. So humans are trafficked for the purpose of sexual slavery, commercial sexual exploitation, extraction of organs or tissues, forced marriage, forced labor, or domestic servitude. So human trafficking also is the third largest organized crime across the world after drugs and arms trade. So if we look at the data available in India, then NCRB data says that over 6,500 human trafficking victims were identified in the year 2022. 60% of them were women and girls. So we have the constitutional and legislative provisions also with respect to trafficking in India. So in our constitution itself, Article 23 Clause 1 deals with trafficking in human beings. It is of course prohibited in our constitution. Immoral Traffic Act was passed in 1956. Similarly, CRPC and IPC provisions were made with respect to human trafficking. POXO Act also talks about, which is basically a special law which is talking about protecting children from sexual abuse and exploitation. It also provides precise definition of what this abuse means. We also have other specific legislations with respect to trafficking in women and children, like the Prohibition of Child Marriage Act 2006, Bonded Labor System Act of 1976, Child Labor Act of 1986, and Transplantation of Human Organs Act of 1994.
Similarly, state governments have also enacted several specific legislations to deal with this issue. So, what are the measures which have been taken by the government to prevent and combat human trafficking? So, to tackle this menace of human trafficking, Ministry of Home Affairs has has taken certain measures, like anti-trafficking cell has been made, which acts as a focal point for communicating various decisions, and Ministry of Home Affairs scheme, which is a comprehensive scheme for strengthening law enforcement response in India, has been made to for the establishment of anti-human trafficking units for 270 districts of the country. So capacity building is being strengthened of police officers and uh, judicial officers also, so that they can effectively deal with the cases of human trafficking. Okay, so the next topic is drone strikes on India bound merchant vessel. This topic is important for your security and your international relations topic. So as per two maritime agencies, a drone strike has damaged a merchant ship of India, but of course no casualties were caused. So Indian Navy is coordinating the communication between Navy and shipping company through this IFC-IOR, Information Fusion Center for Indian Ocean region. So this vessel is called Amphibian Pluto, and it was carrying crude oil from Saudi Arabia towards a port in Mangalore. And IFC-IOR is it's a center of Indian Navy, which was established in 2018, and it was established at the IMAC Gurugram. It was established for regional collaboration on maritime security issues, uh, and it aims to engage with partner nations and multinational maritime constructs. Why is it important to why we are giving so much concern to maritime security, especially of this Indian Ocean region? Because 75% of world's maritime trade and 60% of global oil consumption passes through this region, and it is also part of India's Sagar Vision, Security and Growth for All in the region, which is part of India's mission to have maritime cooperation in the Indian Ocean region. As of now, nobody has claimed responsibility for the strike, but of course, as we know, the Pentagon, the US Defense Ministry basically, has claimed that it was a drone or missile strike from Iran. So Houthi rebels have also been accused by several countries that they have been involved in 100 drone and missile attacks since October 7. So what is the response from India? So India has not accused any country as of now, but Indian Navy immediately dispatched a maritime patrol aircraft, and even a warship was dispatched to provide any assistance if required. And IFC IOR is coordinating the entire communication between Indian Navy and shipping company. Okay. So the next topic is Chinese commercial entities. This topic is important for your security and your international relations topic. So ED has made three fresh arrests against China in connection with its money laundering probe against Chinese smartphone maker Vivo and some others. So PMLA provisions have been made against them. So Vivo India case was started when the Chinese smartphone maker was made the prime accused in money laundering cases, and it was enforcement directorate accused the uh, court. I'm sorry, accused Vivo in court in October 2023 that Vivo had siphoned off almost $13 billion, and they have been hiding their profits for several months. Many people who are affiliated with Vivo, they concealed their employment status while seeking visa for India. And it was also found that some employees of Vivo breached security rules by visiting the sensitive Himalayan region of Jammu and Kashmir. So, if we look at it, then Chinese commercial entities have emerged uh, have been under the radar by Indian authorities since the Galwan Valley incident. Indian authorities have been busting spy rings. Tax raids are being conducted on major Chinese telecom companies. A crackdown on mobile apps are also being made. So we have been able to identify a web of companies and individuals who were involved in the espionage on behalf of Beijing. So if we look at the broader pattern, how and why these Chinese commercial entities are operating in India so they are operating with five primary objectives. First is they want to influence minds of Indians. Uh, Second is to build economic control over Indian economic landscape. Then the third important issue is they want to acquire the data. Fourth is
espionage purposes. And fifth is very peculiar, that they are targeting the scientists so that, I mean, innovation can be compromised in India and IPR can be stolen. Okay, so all these counterintelligence objectives are being pursued by top officials of Chinese companies in India. They have even made small size shell companies who are being used as financial conduits to fund espionage rings and resident agents. So hundreds of small companies controlled by Chinese nationals who have dummy Indian directors. They are not even present in reality, and they have managers just to show that these are companies are legitimate. They do not even exist physically at their registered offices. Okay, so it was also found that they have managed to capture a large chunk of telecom and hardware markets in India. And some senior Chinese employees of these companies are in fact documented members of Chinese Communist Party. Agencies have also found a seamless flow of data to Chinese servers. So remote access of modems, switches, routers, and networks sold and installed by these companies in India are using their own technologies to uh, take away biometric details of millions of Indians. Okay, so why is it a threat? Because for India, internal security, because investments which are being made by Chinese companies like Alibaba and Tencent are being used to manage and control Indian companies. So the objective is to gain strategic advantage over India's economic and security systems and to influence minds. How? So deep cover resident Indians who pose as officials of these companies, they foment the sentiments of masses and create internal disturbances. They actively have been found to be sending money to Tibetan monks to gather information about Dalai Lama also. Okay, so what the government is doing, of course. So Chinese commercial entities have come under the radar of intelligence agencies since the Galwan Valley incident specifically. Multiple raids have been conducted by ED under PMLA. Central government also declared that any foreign investment which comes from a country which shares a land border with India will not be will not be made automatic, but it shall get approval. Okay, so imposed about we have also imposed ban on about 250 Chinese apps. Intelligence Bureau has also created a new wing, China Coordination Center, to collaborate with financial enforcement agencies to investigate these Chinese companies. So the next topic is defense exports to global south. This topic is important for your security and your economy section. So Air Chief Marshal VR Chaudhary ji has said that indigenous aerospace platforms like light combat aircraft, light combat helicopter, they offer competitive and reliable options for air forces of the global south. So that's why there is a need to focus on capability development in global supply chains, and we have to be a part of manufacturing hubs and establish maintenance, repair, and overhaul facilities in our country if we want to pursue the exports of these products. Okay, so what is this light combat aircraft program? It was envisioned in 1980s to replace India's MiG-21 fighters. So in 2003, LCA was officially named Tejas, and it received the final operational clearance for induction into the Air Force as a fully weaponized fighter jet only in 2019. So if we look at Tejas aircraft, it has a maximum payload capacity of 4000 kgs. It is a single pilot engine aircraft, and it is a fourth generation aircraft. It can attain the maximum speed of Mach 1.8. It has a generational range of 850 kilometers and a combat range of 500 kilometers. So, what is Light Combat Helicopter Program? So, it was proposed to meet Indian Air Force requirement for combat operations at high altitudes. So, during the Kargil War, it was realized that a homegrown lightweight assault helicopter is required, which can make precision strikes in all Indian battlefield scenarios. So government sanctioned this project in 2016. I'm sorry, 2006. So the result of it is the HAL Prachand, so which is a Indian multi-role attack helicopter, which made its maiden flight in 2010. So it is the only attack helicopter in the world which can land and take off at an altitude of 5,000 meters with considerable load of weapons and fuels. What is the term global south? So term global south began by loosely referring to those countries who were left out of the industrialization era
So these countries had a conflict of ideology with the capitalist and communist countries, which was accentuated by the Cold War, of course. And these countries now belong to the regions, specifically in Asia, Africa, and South America. Okay. So the next topic is pumped storage hydropower. This topic is important for your economy and your science and tech section. So Mines Secretary has recently stressed on the role of leading organizations under the Mines Ministry to build pumped storage hydropower projects and highways. So what are these pumped storage hydropower projects? Basically, it's a type of hydroelectric energy storage system in which two water reservoirs are configured at different elevations so that power can be generated as water moves down from one to the other, okay, passing through a turbine. Then this water which is collected in the lower reservoir, it is collected and then it is pumped back at the time when there is low demand for electricity. So basically it is a loop. So whenever there is high demand, then of course the water at the from the higher elevation would be made to fall towards the lower side, and it will move the turbine, and electricity would be produced at the time when there is the high demand of electricity. When the demand at the time when the demand is low, then electricity would be used to pump the water collected in the lower reservoir to push that water into the higher reservoir. Okay, so basically it would also use electricity and it would also produce electricity, okay, at certain times. So the surplus energy which would be left would be the one which we would consider as being produced by this system. Okay, so this is a loop, a continuous loop. So the next topic is Project Prayas. This topic is important for your social issues and your international relations also. Recently, International Organization for Migration has launched this Project Prayas to help Indian workers and Indian students to migrate in a secure, orderly, and regular manner. So this name is promoting regular assisted migration for youth and skilled professionals. It was launched in partnership with Ministry of External Affairs. So it is one of the first attempts to consolidate all state level initiatives for safe, orderly, and well managed international migration, and for of course the Indian migrant workers and students. So what is International Organization for Migration? It is a United Nations agency which is dedicated to promoting human and orderly migration. So it offers, of course, at the request of states only, to its support to migrants, but also to internally displaced persons, refugees, and other uprooted people. Okay, currently it has about 172 member states and 8 states holding observer status. India is a member of this organization and its headquarters is located in Geneva, that is in Switzerland. So the next topic is Brahma 2D. This topic is important for your science and tech section. So IIT Guwahati has recently developed an indigenous river model called Brahma 2D. So Braided River Aid Hydromorphological Analyzer. It is a mathematical model to gauge the flow of large braided rivers like Brahmaputra. So it is a quasi 3D river flow model which helps to understand how fast water moves at different depths inside a river and its circulation around a structure. Okay, so it would help engineers in the design of sustainable hydraulic structures also. It will also be applied to understand to the habitat suitability of aquatic species. Okay, so the next topic is UNESCO awards for cultural heritage conservation. This topic is important for your art and culture section. So recently, three heritage projects from Punjab and Haryana have secured prestigious spots among UNESCO Asia Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation 2023. This aims to encourage private sector involvement and public-private collaboration to conserve region's cultural heritage. So this award is being instituted since the year 2000, and among the recognized sites recently, five are from China, six from India, and one from Nepal. Award-winning sites from India include Rambagh Gate of Amritsar, which has received the award for excellence. Pipal Haveli, which is a rural homestay from Punjab, was honored for its sustainable development. Karnikara Mandapam, which has earned the award for distinction, belongs to Kerala. Epiphany in Haryana, David Sassoon Library and Reading Room in Mumbai, Bikaner House in New Delhi, they have received the award of merit. So, what is Rambagh Gate and Ramparts? So, it's a three-story structure which has been built using locally sourced materials. Similarly, People Haveli, which is the rural homestay,
uh, emphasizes on ecological and traditional building methods. It supports women empowerment through various initiatives like Bari Collective, which offers programs which strengthen women's livelihoods through sustainable, environmentally conscious craft practices. So the next topic is UNESCO's BRICS Versailles. This topic is important for your art and culture section. So recently, Kempegowda International Airport, Bengaluru, has earned prestigious accolades at UNESCO's 2023 BRICS Versailles. So this BRICS Versailles is announced each year at UNESCO since 2015 to celebrate outstanding achievements in architecture and design on a global scale. So it focuses on intelligent sustainability as a cultural driver also. Okay, so T2 of Bengaluru Airport has also been recognized as the world's most among the world's most beautiful airports. So T2 of this airport, the Bengaluru Airport, is also known as the terminal in a garden. It is built upon four foundational pillars: technological leadership, terminal in a garden, environmental and ecological stewardship, and a celebration of Karnataka's rich heritage and culture. So the next topic is Watson X AI. This topic is important for your science and tech section. So at the recent COP28, NASA and IBM have collaborated to uh, announce the artificial intelligence tool called Watson X AI, which would be available as an open source platform. So it's an intelligence tool, artificial intelligence tool, which has been jointly built by IBM and NASA to help users monitor Earth from space and measure environmental changes. So this model is designed to be very simple to use. So how would it work? So it has been trained on a broad set of uncategorized data, of course, provided by NASA, and IBM has created this foundational model to interpret this entire data in a very simple format. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.